So we will now explore this subject further through our third session of the day on groundwater governance and management, achieving water security at scale through collaborative efforts. Presenting their views in this session, we have Mr. Girish Karitia from ACT, Mr. M.V. Ramachandrudu from Vasan, Mr. Ishwar Kale from WOTR, Mr. Paliwal from the Dalmia Trust, Mr. R. Srinivasan from Pradhan, and Mr. Prahlad from Marvi. There's 100 to 150 years of experience working with communities and groundwater in this panel itself, तो which is a remarkable experience. सवाल जिनका जवाब मैं चाहूँगा आप लोग जो आपके अनुभव के ज़रिए दें वो ये है कि आपने समाज को कैसे जोड़ा आपके कार्य में, ये जो पहले ये जो जोड़ा उसको आगे आप कैसे बढ़ाएं, और जब आप प्रोजेक्ट क्षेत्र को छोड़ के बाहर जाते हैं उसके बाद समाज और सरकार जो आप छोड़ के गए प्रोजेक्ट के जरिए उसको कैसे आगे लेके जाते हैं, यानी उसको सुस्थिर या सस्टेनेबल कैसे रखते हैं. तो इस पे ज़रा आप ध्यान दें कि आप अपना एक्सपीरियंस अपना अनुभव हमारे आगे रखें तो मेरे ख्याल से सीख काफ़ी आएगी. एक बात तो मैं जो बताना चाहूँगा, और मुझे ग्राउंड वाटर पे थोड़ा चंद सालों से मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य भी लगता है और अच्छा भी लगता है कि जो हमारी समाज है, जो भारत की समाज है, ये नदियों की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हम कुओं के बारे में कम बात करते हैं, जबकि हमारी समाज जो है वो नदी और कुओं की समाज है. हर गांव में कुएं थे, तालाब था, कुआं था. नदी भले ना हो लेकिन कुआं तो ज़रूर था और तालाब ज़रूर था. और ये मोहनजोदारो के टाइम से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2800 BC यानी 5000 साल पहले, जबकि हर तीसरे घर में कुआं हुआ करता था मोहनजोदारो में. जो हम सिंधु नदी की संस्कृति बताते हैं, उस सिंधु नदी संस्कृति में लोथल ले लीजिए आप, हड़प्पा ले लीजिए, धोलावीरा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया करता था, मोहनजोदारो ले लीजिए, सब घरों में या उस गांव में कुएं हुआ करते थे और कुएं के ज़रिए पानी लिया जाता था. तो ये जो प्रथा है वो ये 5000 साल पुरानी है. अब आप सारनाथ ले लीजिए जहाँ गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन हुआ. सारनाथ में नदी नहीं है, बनारस से दूर है, गंगा मां नहीं है उसके पास, तालाब भी नहीं है, लेकिन कुआं है और कुएं में पानी है और पानी मीठा है. तो क्या हम गौतम बुद्ध के साथ उनके जो स्पिरिचुअल सेइंग्स है उसके साथ जुड़े हैं, और उनके साथ जो एक्विफर जिसका शायद उन्होंने उपयोग किया उसके साथ भी हम क्या जुड़े हुए हैं? तो ये 260 BC की बात है. पटना में जाइए, अगम कुआं की बात की जाती है और ये अशोक के ज़माने की कुआं माना जाता है. अगम कुआं जो पटना से आए होंगे, बिहार से आए होंगे, झारखंड से आए होंगे, उन्हें पता होगा. तो ये जो है हमारे जो एक्विफर्स है और ग्राउंड वाटर है, ये तो बहुत पुरानी है. जुड़ाव जो है अब की दशा में आइए, अब की युग में आइए, तो भारत 250 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर हर साल निकालती है अंदाजन. 250 cubic kilometers of groundwater annually. Combined, China and USA together do not use as much groundwater as India does. So we are the world's largest user of groundwater. Many of you know that, some of you may not know it, but that's what it is. We are a groundwater dependent civilization. This revolution was unleashed in the 1960s during a year of drought, during 3 consecutive years of drought and famine, at the same time that the green revolution was unleashed. तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, उसके साथ साथ हार्ड रॉक ड्रिलिंग रिग्स आए, और ये हार्ड रॉक ड्रिलिंग रिग्स यूनिसेफ ने लाया. और जब ये यूनिसेफ से के ज़रिए हार्ड रॉक ड्रिलिंग रिग्स आए तो उसके साथ मार्क 2 हैंडपम्प भी आया, और हर गांव में पानी पहुंचा सूखे के टाइम पे. तो बहुत ही अच्छा अनुभव था 60 और 70 के दशक में. लेकिन 80 के दशक में हमने ऐसे बोरवेल ड्रिलिंग रिग बनाने लगे तिरुचनगौड़ में और अलग जगह कि ये तो करीब पाताल तक पहुंचने लगे, 1500-2000 फुट तक पहुंचने लगे. और हम 33 मिलियन to 40 मिलियन बोरवेल्स हो सकते हैं हमारे देश में. We are the world's largest driller of borewells, not only groundwater exploiters, but fragmented drilling and fragmented use of groundwater. तो ये this is our dependency on groundwater, and this is our critical dependency on groundwater. And as we realize that the dependency or the aquifer recharge is only coming from rain, and rain is getting infrequent, rain is getting intense, rain is getting short in duration, but also maybe more rainfall that is coming. तो हमारा बैलेंस जो सेक्रेटरी सर ने बहुत अच्छी तरीके से बात रखी कि
our challenge now is how do we maintain this groundwater civilization of ours to be sustainable? जो हमारी जानकारी है हमारे पास, जो साथ में जानकारी है, तालाब की जानकारी हो, भूजल की जानकारी हो, इसको साथ कैसे लाए एक साइंटिफिक ढंग से और समाज को कैसे जोड़े। तो ये था मेरा शाम का प्रवचन। अब मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि एक दिस ग्राउंड वाटर इज सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। वी डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ग्राउंड वाटर दैट फीड्स आवर रिवर्स। जो नदियों में पानी आती है समर मंथ में, गर्मियों के सीज़न में, वो अंतर्जल से आती है, भूजल से आती है। और जो स्प्रिंग्स है हमारे, जो जिसके ऊपर चर्चा होगी कल, वो स्प्रिंग्स फीड आवर रिवर्स, मेजर रिवर्स, मोर देन ग्लेशियर्स परहैप्स। तो ये जुड़ाव है हमारा, लगाव है। पानी सब एक है, हम भूजल मानते हैं, नदी का जल मानते हैं, तालाब का जल मानते हैं, लेकिन पानी तो एक ही है, वन वाटर का कॉन्सेप्ट है। तो शायद ये जो अनुभव जो हमारे साथी लाए हैं ये हमारे साथ बांटेंगे। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैं तो ज़्यादा बोल गया, लेकिन आपको 10 मिनट ही दूंगा क्योंकि मैं मॉडरेटर हूं, और मैं शुरू करूंगा एक्ट संस्था से। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गिरीश करथिया है और मैं एरिड कम्युनिटीज एंड टेक्नोलॉजी संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं। जैसे सर ने बताया, एसीटी का जो मुख्य काम है वो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे है। और सर ने साथ में ये भी बोला था कि आप लोग कम्युनिटी को कैसे जोड़ते हैं। तो हम लोगों ने शुरू से यही अप्रोच लिया है, जब तक हम कम्युनिटी को साथ में लेके नहीं चलेंगे तब तक हम लोग कितना भी काम कर ले, लेकिन हमारी जो समस्या है वो वहाँ पे ही रहने वाली है। तो पीजीडब्ल्यूएम के जरिए हम मुख्यतः 5 कंपोनेंट पे काम करते हैं। विलेज लेवल पे स्टडी है, एक्शन रिसर्च है, और जियो हाइड्रोलॉजी बेस्ड विलेज सिक्योरिटी प्लान बनाना है। दूसरा है प्लांट के जरिए सप्लाई साइड और डिमांड साइड इंटरवेंशन करना है। वो लोकल जो जियोलॉजी है उसको ध्यान में रख के हम इसका इंटरवेंशन वगैरह डिजाइन करते हैं। तीसरा है डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो वहाँ का जो हमारा वातावरण है, वहाँ की हमारी जो ज़मीन है, वहाँ का जो फार्मर है, उसकी जो प्रैक्टिस है, उसमें हम किस तरह से लिंकेजेस करके उसको कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। चौथा हमारा जो मेन है वो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का है। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम ज़्यादातर रूरल यूथ को तैयार करते हैं, वो अपने गांव में अपने गांव के लिए कैसे काम कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर यूजर ग्रुप जो है, मतलब फार्मर ग्रुप है, फीमेल ग्रुप है और पंचायत के जो ग्रुप्स है, तो उसके साथ हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का कोर्स चलाते हैं। और 5वां जो है वो अवेयरनेस एंड एडवोकेसी का काम है। तो एसीटी का मुख्यतः 5 एजेंडा पे काम है और हम ज़्यादातर एरी रीजन में काम करते हैं। आज जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ वो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कच्छ में हमने किस तरह से इन्वॉल्व किया था और अभी उसको स्केल पे कैसे लेके जा रहे हैं। तो इस 3 कंटेंट में मेरा प्रेजेंटेशन है कि पीजीडब्ल्यूएम का हमारा हिस्ट्री क्या रहा है, हिस्ट्री के चलते हुए केमार्क कार्यक्रम ने कैसे डिजाइन किया, केमार्क को हम कैसे स्केलअप पे लेके गए, और अभी उसका लर्निंग्स हमारा क्या रहा है। कच्छ रीजन की हम बात करें तो उसके मुख्यत्वे जो कैरेक्टर्स है, तो एक सबसे पहले वो एरिड रीजन है, दूसरा रेनफॉल है वो अनरेगुलर है और हर 3 साल में एक बार हमारे वहाँ पे अकाल होता है। तीसरा बात करें तो हमारे जो एक्वीफर सिस्टम है ज़्यादातर सेडिमेंट्री रॉक है, तो उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो बाय गॉड हमें एक गिफ्ट वहाँ से मिला हुआ है। और ज़्यादातर कच्छ का जो लाइवलीहुड है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो ज़्यादातर अभी ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट है। तो ग्राउंड वाटर का ट्रेस है वो ज़्यादा हुआ है। और दूसरा, अभी तक जो भी इंटरवेंशन हुआ है, काम हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं पे जो ग्राउंड वाटर साइंस की हम बात करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं पे हम जो है वो इसमें नहीं जुड़ पाए। तो वो भी एक मोटा वहाँ पे कैरेक्टर है उसका। रीजन वाइज इश्यू की हम बात करें, सबसे पहला एक एरिड रीजन है। दूसरा है कि जो कच्छ विस्तार है वो पहले से ही समुद्र में से बाहर निकला हुआ एक एरिया है, तो उसका रॉक फॉर्मेशन है, उसमें जन्मजात एक सेलिनिटी का इश्यू है, वो एक हम फेस कर रहे हैं। दूसरा सी वाटर इंक्लूजन, तो जहाँ पे खेत का एरिया है वहाँ पे पानी निकालने की वजह से सी वाटर इंट्रूजन है वो काफ़ी सालों से अभी बढ़ रहा है। और दूसरा, वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेशन जो है उसका इश्यू भी पिछले 10 साल से बढ़ रहा है। और वाटर स्केर्सिटी की हम बात करें तो कोस्टल एरिया में जब जो एक्वीफर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर वाटर क्वालिटी की जो स्केर्सिटी है वो ज़्यादा है। तो ये समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो गांव में काम करना शुरू किया, गांव वालों से बात करना शुरू किया, तो एक निकल के आ रहा था कि अभी तक जो भी इंटरवेंशन डिजाइन हुआ है, जो भी कार्यक्रम चला है, वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए चला है, नहीं तो एक्वीफर को ध्यान में रखते हुए। दूसरा है कि जो भी प्रोग्राम डिजाइन होता है वो ऊपर से एक डिजाइन होके आता है, गांव लेवल पे उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो समस्या है वो कुछ और होती है। तीसरा है गांव लेवल पे जो उसको काम करना है तो उसको हैंड होल्डिंग करने के लिए
कोई बंदा या कोई सिस्टम नहीं है कि उसका लोकल लैंग्वेज में, लोकल जो स्थिति है उसमें उसका कुछ सॉल्यूशन मिल पाए। तो ये समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने, हमारा काम का अप्रोच है, पीजीडब्ल्यूएम स्ट्रेटेजी है, वो इस तरह से हमने तय किया हुआ था कि सबसे पहले जो भी गांव में हम एंट्री करें तो गांव वालों को साथ में रखते हुए जियो हाइड्रोलॉजी बेस्ड लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाना है। दूसरा रखा था प्लान के बाद सबसे पहले हम ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी जो है वो खड़ी करेंगे और उस पर हम काम करेंगे। तीसरा जो हमारा था, कच्छ विस्तार में जो सिंगल एक्वीफर सिस्टम है तो उसका जो मैनेजमेंट है उसको कैसे हम सेटअप करें, तो वो हमने काम किया। फिर जो हमारा सिंगल एक्वीफर सिस्टम का एक्सपीरियंस था तो उसको साथ में रहते हुए शेड एक्वीफर सिस्टम पे हमने काम करना शुरू किया और हमारा पीजीडब्ल्यूएम जो प्रिंसिपल है, प्रोटोकॉल है, उसको हमने इन्वॉल्व किया। उसमें काम करते हुए हमारा जैसे लर्निंग बढ़े तो हम लोगों ने उसको पार्टनरशिप बढ़ाया, स्केलअप बढ़ाया और स्केल में लेके गए हैं। और जब हमने गांव में शुरू किया तो गांव में एक वेल की बात करते हैं, क्लस्टर पे आते हैं तब हम वाटर सेट को देखते हैं, और ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं तो एक्वीफर की हम बात करते हैं। तो डाउन से टॉप तक इस अप्रोच से हम अभी काम कर रहे हैं। भाई हम गुजरात की बात करें, हमने कच्छ क्यों पसंद किया, तो गुजरात के वो 7 अलग अलग जियो हाइड्रोलॉजिकल जोन में है। नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल गुजरात में एल्यूवियम जोन है, ईस्टर्न पार्ट में हार्ड रॉक है, सौराष्ट्र में हार्ड रॉक है, कोस्टल एरिया और कच्छ में सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है। तो कच्छ का जो कोस्टल एरिया है वो हमने इसलिए पसंद किया कि वो उसमें बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब जो एक्वीफर है वो ईस्ट टू वेस्ट है, जो हमारा वाटर सेट और जो रिवर्स है वो नॉर्थ से साउथ है, और वहाँ पे अलग अलग जो हमारे एक्वीफर सिस्टम में क्लेलेंसिस वगैरह है। तो डाइवर्सिटी को हमने ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया कि यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, तो गुजरात के और भी हिस्सा में ये सॉल्यूशन हम लागू कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कोस्टल कच्छ का कंकावती एक्वीफर हमने काम करने के लिए सिलेक्ट किया था, और वही एक्वीफर है वो हमारे 6 टाउन है, 250 से ज़्यादा गांव है, 10 से ज़्यादा इंडस्ट्री है, सबका जो लाइवलीहुड है वो एक ही एक्वीफर पे डिपेंडेंट है। तो इस एक्वीफर को हमने पसंद करते हुए काम करना शुरू किया। हमारी जर्नी की बात करें तो हमने 2010 से 14 तक इस एक्वीफर सिस्टम है उसको समझने के लिए काम किया, जिसमें स्टडी है, वेल मॉनिटरिंग है, और अलग अलग जो संस्थाएं है या हमारे जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों को सबको साथ में जुड़ते हुए वो एक्वीफर सिस्टम को हमने समझना शुरू किया। 14 से 18 तक हम लोगों ने जो सिस्टम को समझा था तो उसको ज़मीन पे उतारने के लिए, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो डेवलप करना शुरू किया। तो वहाँ पे हमारा जो भी CSR एकम्स है, लोकल जो भी NGOs है और सरकार है, उसके साथ हमने हैंड होल्ड करके वहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। और प्लान इस तरह से किया था कि हम लोगों ने ये जो हमारा पूरा एक्वीफर सिस्टम है तो उसमें हमने हर 4 ब्लॉक में 2-2 क्लस्टर डिवाइड किया। कोस्टल एरिया में हम क्या कर सकते हैं और मेनलैंड में क्या कर सकते हैं, और वो जो हमारा अनुभव रहा था उसको हमने 2018 और 20 में मांडवी ब्लॉक में एक क्लस्टर के 20 गांव पसंद करके उसमें डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू किया। और वो जो डेमोन्स्ट्रेशन हमारा रहा था तो 2020 के ऑनवर्ड हम लोगों ने वहाँ पे एक लर्निंग लैब सेटअप किया है। जो 20 गांव है वहाँ पे पीजीडब्ल्यूएम के जितने भी प्रोटोकॉल्स है, प्लानिंग का है, सप्लाई साइड, डिमांड साइड, कैपेसिटी बिल्डिंग, तो 20 गांव को हमने एक लर्निंग लैब बना दिया। और बाहर से जो भी लोग आते हैं, सरकार के डिपार्टमेंट आते हैं, तो वहाँ पे हम उन लोगों को सिखाते हैं, संस्थाओं को सिखाते हैं, गांव लोगों को सिखाते हैं कि आपका जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन किस तरह से हो सकता है। कम्युनिटी के साथ उन लोगों का इंटरेक्शन करवाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो इस तरह से इस 20 गाँव को हमने लर्निंग लैब के जरिए डेवलप किया है। और 2020 के ऑनवर्ड इस लैब के जरिए हम कच्छ के और भी हिस्से में, गुजरात के और भी हिस्से में हम लोग हमारी जो भूजल जानकार की जो टीम है उनके जरिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम हाईलाइट्स की बात करें तो मैंने जैसे बोला 20 गांव जो हमारे हैं उसमें सबसे पहले हमने वाटर सिक्योरिटी प्लान खड़ा किया। वाटर सिक्योरिटी प्लान में गांव की वाटर डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए, वाटर बैलेंस और जियो हाइड्रोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पूरा प्लान डेवलप किया। लोकल जो भी गांव थे, जो सर ने एक बात बताया कि आप लोग काम करने के बाद वहाँ से एग्जिट कैसे होते, तो हमने पहले से ही हमारी स्ट्रेटेजी तय करके रखी हुई कि हर 2 गांव के बीच में एक भूजल जानकार हम खड़े करेंगे। जो भी लोकल नॉलेज हमने खड़ा किया है वो उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और वो लोग जो है वो फिर गांव को हैंड होल्ड करेंगे। तो सभी गाँव में हमने इस तरह से भूजल जानकार खड़ा किया, उसका ट्रेनिंग किया और गाँव में उसको इक्विप करवाया। फिर डिमांड साइड इंटरवेंशन किया, कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन का काम किया, और जो भी काम हुआ है उसको लगातार हम पिछले 5 साल से जियो हाइड्रोलॉजी बेस्ड ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। फिर 2018 और 19 में
जो डिमांड साइड में हम लोगों का इतना नहीं रहा था, तो फिर 2018-19 में हमने कृषि विज्ञान केंद्र को जोड़ा। कुछ स्टार्टअप है जैसे सोइल सेंस है, सीफार है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है। तो इस तरह के जो भी स्टार्टअप थे जो डिमांड साइड मैनेजमेंट में काम करने के लिए हमें कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, तो उन लोगों को हमने जोड़ना शुरू किया। और हमारा जो एक्सपीरियंस रहा था वो कच्छ की जो लोकल दूसरी एनजीओ है, गुजरात की दूसरी एनजीओ है, उनके साथ जोड़ के काम करना हमने शुरू किया। और 2019 और 20 में हम लोगों जो 19 गांव से शुरुआत किया था, तो वो अभी मेरे ख्याल से 200 गांव तक हम उसको स्केलअप में लेके गए हैं। और अलग अलग पार्टनर है जैसे VRTI है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, टाटा है, अदानी है, उन लोगों के साथ अभी स्केलअप में लेके हम काम कर रहे हैं। ये कुछ प्रोग्राम हाईलाइट्स है। तो यहाँ पे हम जो सप्लाई साइड इंटरवेंशन में ज़्यादातर काम जो कच्छ में डिजाइन किया हुआ है, तो पॉन्ड डिसिल्टिंग की जो सेशन में बात हो रही थी, पॉन्ड डिसिल्टिंग में हम लोग भी इस तरह से साइंस को जोड़ते हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है तो आप कितना फीट तक उसको डिसिल्ट करना है, पशुओं को पीने के लिए आपको करना है किस तरह से करना है, क्योंकि कच्छ में समर के टाइम में गर्मी ज़्यादा होती है, तो तब जो समर के टाइम में पानी मिल पाए उस हिसाब से हम उसका लेंथ, विड्थ और डेप्थ जो है वो डिजाइन करते हैं। और जो स्टफ निकलता है, मिट्टी निकलती है, तो उसके साथ हम फार्मर का ग्रुप बना के उनके साथ जोड़ सकते हैं, क्या कि जो मिट्टी है वो लेके जाए और मैनेजमेंट की जवाबदारी उनको हम दे देते हैं। फिर जहाँ पे ग्राउंड वाटर है वो एकदम नीचे है, 250-200 फीट पे है, तो वहाँ पे रिचार्ज, सरफेस वाटर को रिचार्ज में लेके जाने के लिए हमने रिचार्ज ट्यूबवेल जैसे इंटरवेंशन डिजाइन की है कि फार्मर के जो 20-50 फार्मर का ग्रुप है उसके आसपास में कुछ वाटर बॉडी है कि जिसमें 2-3 महीना पानी रुकता है, तो वहाँ पर इंजेक्शन मेथड रिचार्ज ट्यूबवेल लगा देते हैं कि सरफेस का पानी हम ग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर पाए। कोस्टल एरिया में जहाँ पे सेलिनिटी का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हम ग्राउंड फिल्टर वेल है, रिचार्ज ट्यूबवेल जैसी टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की जो मैंने बात कर रही थी, हम फार्मर ग्रुप बना के उसके साथ वाटर फ्लो लगा के वो लोग कितना पानी यूज कर रहे हैं, तो वाटर बैलेंस उसके जरिए कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर जो फार्मर निकाल रहे हैं, तो वाटर सेंसर इंस्टॉल करके वो कितना पानी निकाल रहे हैं, अभी उसके पास कितना है, वो एक्सरसाइज करवाते हैं। और वेदर स्टेशन लोकली वहाँ पे लगाया है, लोकल फार्मर को एडवाइजरी मिल पाए, तो उस तरह के टेक्नोलॉजी को भी हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। और लर्निंग और स्केलअप की हम बात करें तो हमारा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसमें से एक सीख के मिला है कि कम्युनिटी को आप जो ग्राउंड वाटर साइंस है उसको लोकल लेवल पे आप इतना इजी कर दो और उन लोगों को प्रैक्टिस में शुरू से इन्वॉल्व करें, तो उसको बिहेवियर भी हम चेंज कर सकते हैं और वो लोग वाटर मैनेजमेंट में, वाटर कंजर्वेशन में उसकी भूमिका है वो अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। दूसरा है कि अभी हमारा जो भी साइंस है जो हमारे साइंटिस्ट है उसके पास है, लेकिन गांव तक पहुंचाने के लिए कोई ब्रिज होना चाहिए कि लोकल लैंग्वेज में, लोकल स्थिति में उसके साथ जुड़ पाए। तो भूजल जानकार है वो एक ऐसा ब्रिज बन सकता है कि हमारा जो साइंस है, हमारा जो स्टडी है वो गांव लेवल तक ले जा सके और गांव लेवल तक उसको सपोर्ट कर सके। तीसरा जो है विलेज लेवल वाटर सिक्योरिटी प्लान की हम बात कर रहे हैं, तो प्लान का जब कन्वर्जेंस की बात है तो उसमें पंचायत वो खुद अपना एक हिस्सा ले सके, वो जिम्मेदारी लेके गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोग्राम में गांव के कम्युनिटी के साथ कन्वर्जेंस करके उसको हम स्केलअप में ले जा सकते। चौथा जो है वो लोकल कंटेस्ट में जो साइंस है और सॉल्यूशन है वो लोकल कंटेस्ट में है, तो उसको हम स्केलअप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला 20 गांव से हमने हमारी जर्नी शुरू की थी 2014-15 में, तो अभी हम कच्छ के 200 से ज़्यादा गांव में हम काम कर रहे हैं और उसमें हमारे अलग अलग पार्टनर है, VRTI है, APPI है, मराठावाड़ से सभी लोग जो बात कर रहे हैं, तो मराठावाड़ में ग्लोबल परली करके एक संस्था है, तो लास्ट साल में हम उन लोगों के साथ भी जुड़े हैं। वो कच्छ में 160 गांव में उन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं सेमी एक्वीफर पे। फिर अटल भुजल की जो बात हो रही थी, अटल भुजल में भी हम लोगों ने जो एक्वीफर सिलेक्ट किया है उसमें से 2 ब्लॉक आ रहे हैं, तो उसमें अटल भुजल के जरिए भी हम काम कर रहे हैं। तो अभी 250 विलेज में से 200 विलेज में हम स्केलअप के जरिए कर रहे हैं वहाँ पे। और हर 2 महीने में हमारे जो भुजल जानकार है, तो जहाँ पे इंटरवेंशन हुआ है वहाँ पे वो लोग ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डेटा एनालिसिस करके फिर जो कमेटी है, पंचायत है, उसके साथ डिस्कशन करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, कितना एरिया में उसका इम्पैक्ट है। अभी गांव में जो भी पूरे गांव को हमें कवर करना है तो कहाँ कहाँ पे इंटरवेंशन करना पड़ेगा, किस तरह से इंटरवेंशन करना पड़ेगा, वो डायलॉग करना शुरू किया, तो कम्युनिटी का एंगेजमेंट है वो हम खड़ा कर पाए हैं। उसमें जो विलेज लेवल वाटर सिक्योरिटी प्लान की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में हम विलेज लेवल पे वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो गांव की
पॉपुलेशन है, वुमन पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन है, उसका हम डेटा ले लेते हैं। ग्राउंड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर की वहाँ पे क्या सिस्टम है, क्रॉप पैटर्न क्या है, फिर लैंड यूज वहाँ पे है वो किस प्रकार का है, मतलब इरिगेटेड लैंड कितना है, रेनफेड कितना है, तो वो डेटा सब इसमें आ जाता है। फिर वाटर रिसोर्स क्या है, मतलब तालाब, पॉन्ड, रिवर वगैरह क्या है, वेल्स और ट्यूबवेल्स कितना है, वाटर टेबल उसमें क्या है, वाटर क्वालिटी क्या है। फिर यहाँ पे वो गांव का पर्टिकुलर जियो हाइड्रोलॉजी प्रोफाइल आ जाता है, तो वो प्रोफाइल भी हम इस तरह से जनरेट करते हैं। गांव में जितने भी ट्यूबवेल और ओपन वेल्स है उसकी इन्वेंट्री करते हैं। कुछ डीलर है वो एरिया का, तो उसके पास से हम डेटा लेते हैं, वीएस सर्वे करते हैं, और उसके जरिए हम गांव का लोकल जियो हाइड्रोलॉजी प्रोफाइल है वो तैयार करते हैं, और वो उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लगा रहता है। फिर वाटर बैलेंस निकालते हैं कि भाई पशु है तो उसको पूरे साल के लिए पीने के लिए कितना पानी लगेगा, पॉपुलेशन को कितना लगेगा, एग्रीकल्चर के लिए कितना लगेगा। फिर यहाँ पे सप्लाई एस्टिमेशन करते हैं कि वाटर शेड हमारा है उसमें से रन ऑफ होने के बाद कितना पानी हमें मिलेगा, पॉन्ड है, रिवर है, उसमें कितना पानी है, ग्राउंड वाटर में हमारे पास कितना पानी है, और फिर जो डेफिशिएट आता है या सरप्लस है तो उसके लिए हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। तो गांव के मेन प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। वो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, और गांव में कौन से लोकेशन पे क्या काम करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, और वो काम करने से गांव का क्या फ़ायदा होने वाला है, और वाटर टेबल जो है वो कितना इंक्रीज होगा। वो इस तरह से पूरा प्लान बना के फिर पंचायत में हैंड ओवर होता है, और पंचायत में साथ में बैठते हुए फिर इसका कन्वर्जेशन प्लान हम तैयार करते हैं। गाँव वाले छोटे छोटे इंटरवेंशन है वो गाँव वालों को हम जोड़ते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के अलग अलग जो प्रोग्राम है, मनरेगा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रोग्राम है, तो उनके साथ हम टीडीओ को जोड़ते हुए कन्वर्जेंस प्लान तैयार करते हैं। और हमारा जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, तो लोकल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में हम इस तरह से केस स्टडी बनाते हैं। लोकल मीडिया में हर बुधवार को हम एक हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारा कंटेंट उसमें आता है। तो ट्रेनिंग मटेरियल के जरिए, ट्रेनिंग कंटेंट के लिए और लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए इस तरह का हम पेम्पलेट वगैरह भी डिज़ाइन करके उसको शेयर करते हैं। और जो हमारा सक्सेसफुल इंटरवेंशन रहा है जिसको हम स्केल में लेके जा सकते हैं, तो उसका हमने केस स्टडी वगैरह बना के, पेम्पलेट वगैरह बना के रखा हुआ है, ताकि दूसरों लोगों को भी करना है तो वो कर पाए। और इस पूरा हमारा जो कार्यक्रम है उसमें बहुत सारे सपोर्टर का भूमिका रहा है, तो सबका मैं यहाँ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स। First of all, thanks to the organizers for inviting me for this workshop. We are associated with water-related issues for almost 20 years at Vasan. We started with Watershed Development Program as a support organization, and then started working with several partners. Our main mandate was to provide support services, capacity building related support, training and etc. related issues at a scale. So our mandate was to work at the scale. So we started in Andhra Pradesh and Telangana, United Andhra Pradesh almost 22 years back, and worked with several watershed development projects and NGOs and state governments. What we realized over a period of time is when government is investing money in conservation, people are putting money in exploiting that conserved water in the form of borewells. So we are ultimately getting some kind of zero-sum game, and whatever is expected out of watershed, that is not happening. So we thought this is not the way to promote capacities or investment, we should have a solution. So we started working in different sectors, including groundwater management. We came in touch with like-minded organizations, and RQM, ACT, Aquadam, PSI, all of us started wondering how can we manage groundwater, and then in that process we tried to do several things in an integrated way. Watershed and drinking water, watershed and sanitation, watershed and crop water demand management. Can we integrate alternative livelihoods to farmers? Water demand, can we reduce it? Can we augment water through appropriate science of geology? So we tried all that kind of stuff and had very good experiences on the ground. We tried to create people's institutions and knowledgeable people like Bhujal Jankars, community resource persons. All of them started working, and then they helped in crop changes, water estimations, better location of water conservation structures, demand management, whatever are the good practices that we are talking since morning. We try to do all of them with at some scale. It is not in a small village or so. We did at some scale. As part of that, one of the interesting experiences is, can individual farmers, most of the farmers in drought-prone areas have their own private borewells, and some farmers do not have borewells. And what we encourage the farmers who own borewells to share water from their private borewell with those who don't have borewell.
So it's a kind of pooling of existing private bore wells and then supplying water to all the farmers in that command area. It's a small microgrid which will ensure water to all the farmers who fall in that small microgrid command area. It ranges from 10 farmers to 50 farmers, 60 farmers. Areas also range from 15 acres to 150 acres, 200 acres, depending on the local geological conditions and agreement of farmers and water resource capacity there. And after that, these farmers help each other in developing calendars, monitoring water, using that water in a systematic way, number of waterings for each land, what kind of crops should they grow, and they also have an agreement for not digging any new bore well for almost coming 10 years. So that is how we could demonstrate some kind of water governance at a micro level in about 50 villages in different parts of the country, mainly AP, Telangana, Orissa, along with partners with our own field implementation teams. So after accumulating so many good practices and collective knowledge of the sector, we try to intervene with donors like Department of Land Resources, NABARD, and Government of Andhra Pradesh. We were also successful in getting major public investment in the form of AP drought mitigation project, which was also funded by IFAD. This project has allocated almost 300 and odd crores for collectivization of groundwater based on institutional arrangements and networking of existing private borewells, which I think is a unique model where a common groundwater resource is privatized by individual borewells. Through this effort, we try to convert them into again a common pool of resource, and it is utilized by all farmers who fall in that kind of micro command. This was the kind of experience, but I would come to challenges in this whole process. So first of all, I think for last 8 years or 10 years, watershed programs, we talked a lot. I think almost every resource person since morning mentioned about watershed program, but we also have huge campaigns and a lot of appreciation for watershed type of program. But for last 10 years, I think the actual expenditure by Government of India and several states is actually coming down. Watershed projects are not really running in the states because of the 14th Finance Commission and 15th Finance Commission, where 40% of the funds should come from states. For many states, watershed is still not the priority, and they don't want to contribute 40%. As a result, DYLR has 5,000 crores of rupees every year, but hardly less than 1,000 rupees is actually allocated to the states because most states don't want watershed programs. And of course, they don't want NGOs also. I was very happy, our Secretary Sir was actually appreciating contribution of NGOs. These kinds of positive vibes and blessings and appreciation, recognition is quite scarce these days. I'm very happy, sir, you actually recognized and acknowledged some of the contributions. But in reality, watershed programs, the government itself is not able to take the expenditure, put money there. And of course, role of NGOs is almost out of the window. It is not there anymore. And similarly, another choice is Manrega. Manrega programs, Manrega investment, though they say water is the primary focus, but we know there are so many challenges in actually having a proper action plan for executing water conservation programs. It is again another virtual water program. There is no real water in many of the Manrega related programs. So the two major investment programs in drought prone areas are almost not functioning for almost 8 years now. So what do we talk about conservation and governance? We are only moving towards more scarcity, more problems, and only private investment is coming, public investment is not there. I think we really have to look at how can public investment be augmented even for conservation. The next step is projects like Atal Bhujal Yojana, which are working in some states. I have a sense that it is not working effectively in several other states also. So we need to really figure out how government, states, central and state governments can put together and then collaborate with NGOs in such governance related programs. I think there are huge challenges in allocating budgets, capacity building, and also physical works related budgets on conservation and sharing of water. I think what we need in terms of public policy, particularly for better governance, is not just conservation investments, which is again
anyway, it's coming down drastically. We also need investments on sharing of water, capacity building, those kinds of initiatives. Whatever good practices that we listened either from BIOF or so many experiences since morning, most of them are funded by external donors and CSRs. Government investment in creating Bhujal Jankars is not really there. Atal Bhujal Yojana is now picking up and doing it, which is very, very good. But in watershed programs, that was sidetracked. That agenda was there, but it was sidetracked. So basically, the public investment is there, but it became a notional investment in real terms. So watershed, Manrega, and other programs are not really making investments on either conservation or next step utilization and management. So this is a major challenge that we have. That drought mitigation program that Vasan could design and get it approved in collaboration with the government of Andhra Pradesh, that was abruptly stopped. It had almost 300 crores, 200 and odd crores towards community managed groundwater sharing systems for irrigation in a drought prone system for mitigation of drought. But that program was suddenly stopped without any, answer to anyone. So I think we also need to reflect what kind of enabling conditions do we have, for governance of water, starting from conservation, utilization, and other, management related aspects. But I think we should not lose heart. This is a battle, that we all need to engage. When there are like-minded good officers at the helm of affairs, many things would happen. We only look forward to such, good climatic conditions for germination and, proper growth of any seed. There are very good practices, there are very good seeds, there are so many good ideas that are really proved at scale also. But upscaling them is still a challenge, I think, because public investment is not going to the right boxes. It is traditionally going still conservation. Even in urban context, we are still not moving towards lake rejuvenation related efforts, which are depending on nature-based technologies. Still we traditionally think of STP kind of systems and things like that. So while there are good practices, experiences on scale, taking them to bigger scale, the role of government, I think, is very, very confusing, to put it in a very positive way. Sometimes we get very good opportunities, very good initiatives, but they are virtual. To touch them, to put them on the ground, it requires Bhagirath, efforts, which I think we are all engaged in that process. It's a major challenge for all of us. We only look forward to good collaborative and like-minded officers for upscaling this. And then once we demonstrate that collaborative space at some level, then I think communities will be inspired looking at the leadership there. Currently, groundwater governance, there are no good leadership role models in the country. We have good role models in conservation. But what about role models in real sharing of water? Today morning somebody said Pani Panchayat model, we are unable to upscale, it is very small. I think it's true, it is difficult to upscale, but we did it in 50 villages in groundwater, not public resource, it's a private resource, people were able to do that. I see a lot of, self-help in that programs. People think if we share water, if I'm a borewell owner, if I share my water with others, my well is protected, my welfare is protected. That is how those farmers came forward, which is a possibility. But we need to create that enabling condition at scale. We need to create that role models at scale. And we also need to create that governance-related support systems, going beyond conservation, looking at good practices, with a genuine mind, put money where it is required. I think that's what is necessary there. I think I stop here. Thanks. And I hope I'm in time. And thanks for this opportunity, and I hope I did not upset anyone. I was only trying to see what is the challenge in groundwater governance. Groundwater governance is not good practice. We all have good practices, 1,000 good practices, but they should go to 1 crore. 1,000 is not sufficient, and we are not sufficient for that. That is the point. Thanks very much. Here I am talking the very important and the innovative, we say, the approach we have built, tested, and now put across a scale in more than 300 villages in different states in India. I represent
WOTR, that is Watershed Organization Trust, that is a Pune-based organization. And WOTR has a different verticals. We started with the watershed development work with the NABARD and German government and built the Indo-German watershed development program. But thereafter we started with this climate change adaptation projects, ecosystem-based adaptation projects, the women empowerment, the livelihood projects, even this crop advisories to farmers for this taking the right decisions for the preventing their crops from the disasters. So I'm here only focus on this innovative models we have developed on this in the water sector. So this is regarding the water stewardship approach we have developed and built. So basically, why this water stewardship approach is needed actually. I will later talk about this, what is water stewardship. But we have seen as, and we have rightly discussed that our more focus was then that building the conservation type of structures and increasing the visible water actually that can be seen in the lakes and the dams and even the tank desalination type of projects. So into that our whole focus on this artificial groundwater recharge, groundwater and the aquifer, which is the major buffer for us in the difficult days. So this artificial recharge and in a larger term this managed aquifer recharge was missed into this whole process. So that was one of the background, and of course this demand side management and the governance at the ground. So the people understand their responsibilities, take the right decisions. So that was not sufficiently addressed, and even state has made different type of policies and laws with good intentions into the groundwater management, but there are a lot of loopholes, gaps, and it was not rightly getting practiced by the people. So we found that to address these gaps actually, we can come with this water stewardship approach. So basically this water stewardship approach provides us the opportunity to intersect the science of the water, that is hydrology and the geology. At the same time the governance at the policies, laws and the communities together for the behavioral change of the communities. So that is the approach where this community understand, they come together and they understand they have the responsibility, the collective responsibility to take the action on the ground for the equitable, sustainable and the judicious water use. So there are basic few principles we have adopted into that, and that is more important. But the assumption is that the community or the people has to be seen water as a shared resource, and particularly the groundwater. That should be the shared resource. Only then they can come together for the its management. And also we need to understand and give the respect to the farmer communities that they are not the culprit actually. They are forced to do that type of practices using the groundwater. But if we believe that their capacities can be built, they are sensitized, they can be a good water manager. So with having these two assumptions, we have built few conditions actually for that, and also put the few processes. Into the processes, what we did actually, we built this stakeholder engagement forum, where these different stakeholders can be bring together. They can discuss, debate, plan and take actions for the right type of strategies. So as we see the Bhujal Jankars, into this we have started this Jalasevaks and Jalasevikas. They are the rural youths actually. We train them and they mobilize the villagers for these better water management practices. We form these village water management teams. So we clearly not saying at the committees, because there are a number of committees already into the villages. So these are the informal teams of the interested people into the groundwater management. And into the stakeholder engagement events, we also share the local data, the local information, the scientific studies with them. For example, if they want to take the farm ponds, so what are the strength, but at the same time, what are the ill effects of the farm ponds if they take in a way that they are extracting the groundwater and then it is exposed to evaporation. That's how they are also making this groundwater as a private resource by putting into the farm pond. So this scientific information, the logics also we put into that, so
they can take a better decision into that. So we find that these three stakeholders are very crucial that need to be bring together for taking the right decision. One, of course, is the primary stakeholders, who are the local level water users for the different purposes. There are secondary stakeholders, because water is not seen only as a village, but there are many upstream, downstream issues. Water is shared between the different clusters. So all dependent villages also need to be bring together for the water management. And there are tertiary stakeholders in terms of these government officials, donors, the NGOs working into that, the accommodations. So unless we bring all these stakeholders together with their understanding and recognizing their strength and make a plan for this water management, we can't make a good plan without their integration. So there are few key components of this water stewardship initiative. One is that its whole focus is improving the local level governance. Local level governance in the sense that these people take decisions of what crop has to be taken, what type of bands they have to make on these boreholes, what level the drilling is required into the villages. So they come with their own rules and regulation. As I talked, JSA and JSA are the crucial part of this village water management team, demand side management. Also the convergence is also crucial part for this, because convergence in terms of this government, the public money coming, the CSRs are there. So this convergence help out to make people the work to take into their villages. So water budgeting is a very important tool of this approach. The water budgeting tool is not only WTR is saying that many people are doing water budgeting activities, but what we understand, this water budgeting has to be put a dynamic, because it's very difficult, as we had said, that with this climate change and erratic rainfall, there is a lot of variation into the rainfall. So we are putting 2 rain gauges into the villages so that the variation can be captured. The another issue is that as there is a lot of gap in a rainy days, and there is a lot of changes into the frequency. For example, if there is a 2 mm rainfall or 3 mm rainfall, so whether it should be calculated into calculating the total rainfall, because it's not getting recharged or it's not getting harvested. So all these dynamics nature we have to consider into the mind. Also this water footprints and virtual water that at morning the issue came, these issues need to be understood by people. For example, if they don't take the 1 hectare of sugar cane, so how much water tanker they can save actually into their villages. And in summer they just bring these 40 tankers or 50 tankers throughout the period. But if they just make a 40 ton or 50 ton less sugar cane, so they can meet their water needs into the villages. So these calculations of this virtual water help them to understand actually how they can make a plan. The micro irrigation is the crucial part of this, and not only micro irrigation in demand side, but soil health practices also need to be focused, that we focus into that in terms of this increasing their soil quality by these different organic inputs. The rainfall has to be collected at the at the local level, because unless we have the local level data, our water budgeting don't get a very precise and accurate. And as I said that the rules made into the villages by the Gram Sabha into the Gram Panchayat, and they ratified it. So the local people make their own rules. That is also the very crucial part of this stewardship. So finally, what people do this, they make the water stewardship plan. If you see this cycle actually, so basically when we enter into the villages, the villagers, we have developed this water health chart. That is a very useful tool actually. It's very simple, 25 indicators. So once people do that, they arrive at whether their water health of that village is healthy or ill or severe ill. So that trigger them actually to take some sort of action in terms of the water budgeting. So once they do the water budgeting, then of course there is some deficit or the surplus. If there is a deficit, then we promote them to take a water harvesting plan actually, so they can make additional water. But at the same time, they have to make a water saving plan in terms of this, the micro irrigations, crop changes, and then make a rules for this following that water budget. So this is the cycle they have to follow.
And water budgeting is not a one-time exercise. This cycle has to be repeated for 2 to 3 years, so that then we can understand some change into the villages. So water budgeting, we promote them to calculate at 2 times. One, the pre-kharif. So that help to them to understand what are their requirements and what type of measures they have to take in terms of making the additional water harvesting structure, taking the basically the water saving practices. At the same time, even we make post-kharif also, post-monsoon also. So that is more accurate, and that is very helpful to make the changes into the crops. And this is also important. These activities don't get just into the registers and the people. It need to be displayed on the public places. The people understand, discuss these all issues into them. So they can also easily understand this. This is the crucial part. Just I said that water budgeting is important, but this is more important. What we put is a sustainable aquifer management. So this is the tool we have developed called CDVI that I will discuss later. So this CDVI tool is very important to understand that the aquifer systems are shared systems, and that shared, because they are shared, these communities need to come together to take a collective action for the aquifer management. Yeah, this is the calculation I have. Okay. So this tool actually help the communities. How many minutes I have? 2, 3 minutes? Okay, okay. So this tool is very helpful to understand the invisible nature of the groundwater, that is aquifer system, and make it visible to the people so that they easily understand what is the nature of the aquifer systems. So as I said that this is a very useful tool actually. And how we make it actually, this tool, if you see it needs some primary data and the secondary data in terms of the geology, hydrogeology into that. The people's, the indigenous knowledge also get used into this to make such models. So initially we prepared these 2D maps. If you can see the first map of this Malegaon aquifer is the 2D map of this surface aquifer, surface characteristics in terms of the contours. And the second is with this whole assessment is the aquifer we have delineated for this. This is shared by these 14 villages. After that, we cut these contours in different contour-wise. This corrugated sheet get cut, then it get pasted by contour-wise, and finally the products come like this. Actually, the last picture you can see. The first is the surface 3D map of that 14 villages. But at the same time, we can see in next map what is the below characteristic or the subsurface characteristic of that. So beauty of this is that basically the people understand they are sharing that the common aquifer where they are living. So these models get circulated, these village water management teams, they take the model into the villages, they sensitize these villages, and that's how the lot of mobilization is there. So finally, we have put this model into the Jalna district for these 14 villages. They share the common aquifers, and we have formed this aquifer management committee of that aquifer, and they are taking care of this by making different plans for this protecting that aquifer, building the conservation of that aquifers, and the protection of that. And of course, these women are a very integral part of this whole mobilization. If you can see, this lady this received this prestigious UNDP award of this Women Water Champion for her work into this whole initiative. So there are these few publications into that. If you allow me 1 minute only. 1 minute only. Yeah. It's not only the challenges we are facing into that actually, and that is very crucial, I guess. One of the challenges that through this water stewardship plan, the water budgeting, almost we find that 80–90% people get sensitized and they get consensus for doing that. But there are again these 10 to 12% farmers, they are the bigger farmers. So they don't come together because they have some type of the hesitation, they will lose their interest, and they are the bigger water users actually. So
So how to address them, actually it's very challenging, and I think rules and regulations can be a very important part into that. And on this sustainability issue, because after this project, I also had a discussion with Dr. Paul Rajarao at the lunch time. Once after this project completion, it's very difficult to expect that the communities will take for a longer time. We need some sort of follow-up for that, actually, some sort of motivation so that they can take, but some sort of follow-up is required for that. Thank you. नमस्कार, मैं जल शक्ति मंत्रालय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान जो कि चिड़ावा क्षेत्र में काम करे है, वहाँ से मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं एक वीडियो के माध्यम से, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से पहले दिखाना चाहूँगा और उसमें कुछ शेष बचेगा तो मैं अपने स्टिपुलेटेड टाइम 10 से 12 मिनट में ही अपनी बात को ख़त्म करूँगा। राजस्थान की सूखी बंजर जमीन पर आज लहलहा रहे हैं अन्न धन के झूमते लहलहाते खेत, फलों से भरपूर बाग बगीचे, सब्जियों से सजी क्यारियां, जल के फव्वारों से सींचते खेत। नानू दादी की प्रेरणा से तो यूं हुआ यह चमत्कार। राजस्थान है मरुधर भूमि का स्थान। यहाँ का किसान बहुत ही परिश्रमी, सच्चा सारथी एवं प्राण है। चिड़ावा तहसील के ग्रामीण इलाकों में रघुहरी डालमिया जी और उनकी कार्यकुशल टीम ने इस क्षेत्र में ग्रामीण भागीदारी के अंतर्गत अद्भुत व्यावहारिक प्रयास किए हैं। जल की इसी महत्ता को समझने के बाद डालमिया संस्थान इस नतीजे पर पहुंचा कि जल ही अमृत है। संस्थान ने वर्षा जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन को लेकर के एक समेकित परियोजनाओं का पर कार्य किया है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, सीरी पिलानी, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ जयपुर और कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर जैसी संस्थाएं साथ में जुड़ी हुई हैं। पुरानी और नई तकनीक का एक अद्भुत समावेश किया जा रहा है। यहाँ आज जीवन और जीविका में इसके अच्छे परिणाम देखते ही बनते हैं। इसी दिशा में रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान ने अमृत जलम परियोजना को कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया है। चिड़ावा तहसील के अनेक गांवों में जल संवर्धन द्वारा बारिश के पानी को छतों से उतारकर पाइपलाइनों द्वारा जमीन के अंदर संचित करने का अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। डालमिया संस्थान द्वारा वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कुंडों का निर्माण किया जा रहा है। छत एवं कुंड के मध्य में पॉपअप फिल्टर्स लगाए गए हैं। सरकारी भवनों में FRS के माध्यम से शुद्ध पानी कुंडों में डाला जा रहा है। कुंडों के ओवरफ्लो और गांवों के रास्तों के ढलान के पानी को पुराने ओपन कुओं और नए कुओं का निर्माण कर उनका पुनर्भरण किया जा रहा है। गांव के अंदर के आम रास्तों और स्नान घरों के पानी के निस्तारण के लिए सोक पिट्स लगाए गए हैं। संस्थान द्वारा 5 कच्चे और पक्के तालाबों का निर्माण किया गया है। पक्के तालाबों से पाइपलाइन के माध्यम से पानी छोड़कर खेती और बागवानी के कामों में लिया जा रहा है। कच्चे तालाबों के माध्यम से पानी रिचार्ज किया जा रहा है। इन सभी कार्यों के इम्पैक्ट को जांचने के लिए संस्थान द्वारा पीजोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। हर मास की पहली तारीख को इनका माप भी लिया जाता है। क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई इसे नापने के लिए वर्षा मापी यंत्रों को लगाया गया है। इस माप के अनुसार ही किसानों को खेती के बारे में बताया भी जा रहा है। जन जागरूकता के आधार पर डालमिया संस्थान ने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जल की महत्ता को बहुत ही सहज रूप से दर्शाया एवं समझाया है। हमारे विद्यालय में सिंगल फेस का बोरवेल था जो सूख चुका था। पानी की बड़ी विकट समस्या थी विद्यालय में। डालमिया सेवा संस्थान द्वारा 2012 में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो तालाब बनवाया, उसके कारण से विद्यालय में बोरवेल में पानी की आवक हुई। गांव के लोगों को जल जीवन और अपनी धरोहर से कितना लाभ हो सकता है, इसको भी बहुत ही व्यावहारिक दृष्टि से दर्शाता है ये भित्ति चित्र। ये फड पेंटिंग पर आधारित है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड UK, IIT मुंबई, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड स्टडीज एवं श्री कल्याण जोशी जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान का रिसोर्स सेंटर तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू में केंद्रित है। समाज में जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई है।
हमें आने वाली पीढ़ी की चिंता है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या विरासत में देंगे। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम शुद्ध पेय जल और शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवा ये हम उनको दे पाएँ। ये सब के लिए हमारा संस्थान प्रयासरत है। रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान ग्रामीण भारत की अभिनव तस्वीर बनाने में तत्पर है। चिड़ावा क्षेत्र की मिट्टी की खुशबू विश्व भर में फैले, यही रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान का प्रथम और अंतिम निवेदन है। ये एक छोटा सा प्रयास वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें कवर करने का था। इसमें साइंटिफिक जो इंटरवेंशंस हैं उनके बारे में ज़्यादा वीडियो में जिक्र नहीं हुआ है, तो उन चीज़ों के बारे में मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि ये जो एरिया है सेमी एरिड एरिया है, यहाँ संस्थान पिछले लगभग 18 वर्षों से पानी और पर्यावरण को लेकर के कार्य कर रही है। मुख्य उद्देश्य जो जब यहाँ पे संस्थान ने कार्य करना प्रारंभ किया 2004 में, तो उद्देश्य था खुशहाली। आज सुबह भी जिस चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही थी कि खुशहाली आए तो कैसे, प्रॉस्पेरिटी विथ इक्विटी एंड हार्मनी। समृद्धि जो हो वो समानता और समन्वयता निहित समृद्धि हो, सबको बराबर की खुशहाली मिले, सब उसकी भागीदारी सबको बराबर रूप से मिले, उसको लेकर के संस्थान की स्थापना की गई थी। और चिड़ावा ब्लॉक में 89 विलेज हैं, सभी में संस्थान काम कर रही है। क्षेत्र की यदि बात करें तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन रेट इट्स मोर देन 228%, हाईएस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। चैलेंजेस की यदि हम बात करें चिड़ावा की, तो जो अभी हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, लो एंड इरेटिक रेनफॉल है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि कोई भी पेरिनियल रिवर नहीं है, कोई कैनाल नहीं है, इसलिए पूरी 100% जो डिपेंडेंसी है वो ग्राउंड वाटर के ऊपर है। ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड होने के कारण जो सिस्टम है वो पानी बहुत ज़्यादा और लार्ज स्केल कल्टीवेशन जो है वो हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का है, लाइक कॉटन है, जिसमें मुख्य रूप से कॉटन है, मूंगफली है, प्याज है। इन चीज़ों में पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सभी जगह हम देख रहे हैं केमिकल बेस्ड फार्मिंग है, उसके कारण वाटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है। दूसरा, वाटर क्वालिटी जो है लगातार डिटोरिएट हो रही है। हाई TDS, मोर देन 6000 ppm का हम पानी वहाँ पे पीने को मजबूर थे। हाई फ्लोराइड 5.3 to 6 ppm का फ्लोराइड वहाँ पर है। इन सारे चैलेंजेस को और इन सारी चीज़ों को देखते हुए संस्थान ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए कि क्या ऑब्जेक्टिव लेके हमको ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है। वहाँ हमने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रखा कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर हमको लोगों को मुहैया करानी है, और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो कैसे हो, क्योंकि पूरा पानी ग्राउंड वाटर हमारा एग्रीकल्चर में जा रहा है। एग्रीकल्चर की यील्ड को कैसे साथ साथ देखा जाए, सैनिटेशन को कैसे देखा जाए, और साथ में वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए। इन सबको देखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मेरे से पहले भी हमारे तीनों साथियों ने जो बात करी, कम्युनिटी बेस्ड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हुई। उसी के तहत फिर जब कम्युनिटी बेस्ड की हम बात कर रहे हैं तो हमने इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग की बात की कि वाटर की सेविंग कैसे होगी, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंटीग्रेटेड वाटर को लेकर के है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच और कैपेसिटी बिल्डिंग, हर तबके का कैपेसिटी बिल्डिंग उसमें करना ज़रूरी है, चाहे वो एंड यूज़र है, चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं, और चाहे हमारे दूसरे साथी जो फंडिंग एजेंसीज ही क्यों ना हो उसमें। और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको इसमें देखने को मिले हैं। एक्टिविटीज़ जो बेसिकली हमने की, साइंटिफिक स्टडीज़ हमने इसमें सबसे पहले की। विलेज लेवल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, जिनको हम ग्राम विकास समिति हमने इसको बोला, ग्राम विकास समितियां हमने बनाई। जैसा पूर्व में भी मेरे साथी वक्ताओं ने बात कही, ग्राम विकास समिति बनाई, उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई किस तरीके से गांव के अंदर पानी से संबंधित काम होने हैं, क्या काम होने हैं। यदि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक भी बनना है तो सबसे पहले किसके बनना है, प्रायोरिटी किसके हो, उसका चयन वो करें। साइंटिफिक स्टडीज़ जो की गई वो हमने जियोफिजिकल स्टडीज़, पूरे 89 विलेज की हमने जियोफिजिकल स्टडीज़ करी, जिसके माध्यम से हम ये जान पाए कि हमारा आज का वाटर टेबल क्या है। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स भी हमने जो ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से बनाए थे। उसके बाद हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे हम आए,
नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो की। इस तरीके से हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए जिनके माध्यम से करीबन 20,000 लीटर का ये एक टैंक होता है और एक परिवार जिसमें 8 लोग भी यदि हैं और पर डे पर पर्सन यदि 8 लीटर पानी भी कंज्यूम होता है तो भी उनके लिए 300 दिन से ज़्यादा का पानी इसके अंदर पर्याप्त होता है। ये पूरी तरीके से सेफ़ होता है, पूरे साल वो इसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर को वो काम में ले पाते हैं। हम रिचार्ज वेल की बात कर रहे थे, रिचार्जिंग की क्या है, पूरे गांव से जहाँ हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाए हैं वहाँ हम बारिश की एक एक बूंद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो हमारा मुद्दा भी है कैच द रेन का, जो पानी हम पकड़ पाए उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स में इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद का जो सरप्लस पानी है जो घरों से बाहर निकल के रास्तों में आकर के रास्ते को ख़राब करता था, उसको पाइप नेटवर्किंग के जरिए चैनलाइज करते हुए नियरेस्ट जो भी वेल है, जो भी अबंडेंट वेल मिले, उन अबंडेंट वेल्स का हमने इस्तेमाल किया ताकि उनको हम रिचार्ज कर सकें। सुबह के सेशन में एक बात आई थी कि कुछ लोग वेल्स, जो पुराने वेल्स हैं, जो अबंडेंट वेल्स हैं, उनको लोग ख़राब कर देते हैं। गांव में वो कचरा डालने के काम में आ जाते हैं कि भाई ठीक है अब ये एक ऐसा स्पॉट हो गया, इसमें कचरा डालो, गंदगी डालो और इसको भर दो। हमने ऐसे वेल्स को भी 100 फीट तक खोद करके उनको वापस से साफ़ किया और पूरे गाँव के पानी को ले जा करके वहाँ पर उसमें रिचार्ज के लिए उसका इस्तेमाल किया है। ये आप जो एक वेल देख रहे हैं इसको 4 पिलर वॉल्स बोलते हैं, 4 मरुए वाला कुआं। हमने एक नया कॉन्सेप्ट, एक बात रखी कि ये कुएं वो कुएं हैं जिन्होंने हमारी पुरानी पीढ़ियों को पानी पिलाया है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन कुओं को पानी पिलाएं जिससे ये आगे आने वाली जनरेशन्स को पानी पिला सकें, क्योंकि हम उनको रिचार्ज करेंगे तो ग्राउंड में पानी जाएगा, तब हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स को वो पानी मिल पाएगा। तो अब ये जिनसे हमने पानी पिया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको पानी पिलाएं ताकि आगे जाकर के अगली जनरेशन्स को पानी मिले। ये कुछ पॉन्ड्स हमने बनाए थे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरीके से, जहाँ पे हमको रेन वाटर स्टोर करना है और स्टोर करके ये जो आप एक राइट साइड अपर कॉर्नर में एक स्क्वायर शेप में देख रहे हैं, ये एक इस्माइलपुर हमारा एक मॉडल है, रिसोर्स मॉडल विलेज है। इसमें 145 घरों में 145 टांके बने हुए हैं। सभी टांकों का जो ओवरफ्लो है उसको पाइप नेटवर्किंग के जरिए चैनलाइज करके इस तालाब में लाया गया है। इस तालाब को बनाने के लिए एक ग्रामीण ने अपनी भूमि का दान किया है। ये भूमि दान की हुई है जिसके ऊपर ये तालाब बनाया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से इसके पास में सोलर लगाई गई है और उस सोलर के जरिए ड्रिप के माध्यम से इसके पास में नींबू, किन्नू और मौसमी के ऑर्चर्ड लगाए गए हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक एक बूंद जो हम बचाने की बात कर रहे हैं उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां हम इस्माइलपुर गांव में एक एक बूंद को बचा रहे हैं, उसको या तो स्टोर कर रहे हैं या सहेज के ले जा रहे हैं और उससे हम आगे जाकर के फिर खेती कर रहे हैं। ये इस तालाब का जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पहला उद्बोधन मन की बात में पानी को लेकर के था, उसमें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। मैं एग्रीकल्चर पर ज़्यादा बात नहीं करके आज अभी सेक्रेटरी साहब ने भी एक पानी की कलश की बात चल रही थी। हमारे 89 विलेजेस जो हैं उनमें पूरे में एक अमृत जलम कलश यात्रा निकालते हैं और इस कलश यात्रा का सर मुख्य उद्देश्य यही होता है कि गांव-गांव जाएं, वहां से महिलाएं, पुरुष अपने क्षेत्र के, अपने घर का जो भी बारिश का जल संचय उन्होंने किया है वो ला करके थोड़ा थोड़ा पानी वो उसमें डालें, वहाँ उसका पूजन हो और वहीं पे हम हमारे अवेयरनेस का जितना भी मटेरियल है वो सारा मटेरियल डिस्प्ले करके उनके साथ वहाँ पे चर्चा करते हैं और उस चर्चा करके फिर वहाँ से वो दूसरे गांव में ये रथ चला जाता है, फिर वहाँ जा कर के उस पर चर्चा होती है। इस तरीके से ये रथ पूरे निकलता है और विश्व जल दिवस के दिन ये पूरा उसका एक समापन होता है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होकर जो गाँव में चर्चाएँ हुई हैं उसके समेकित वे में चर्चा की जाती है। ये प्लांटेशन की आज सुबह बात चल रही थी कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ये पेड़ की एक हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि जो ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के अभी तक संस्थान अपने स्तर पर प्लांटेशन का कैंपेन कर रही थी, लेकिन सर एक चीज़ बहुत अच्छी हमने पिछले कुछ सालों में देखी है कि जहाँ जहाँ हमको ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के सपोर्ट मिला है, जैसे यहाँ हमने प्लांट्स हमने लगाए, फेंसिंग हमने संस्थान की तरफ से की, पिलरिंग का पिलर जो लगाए गए उसका खर्चा कम्युनिटी ने दिया और जो खड्डे किए गए और जो उस पर पानी देने की और जो उसमें रखरखाव करने की जिम्मेदारी है वो ग्राम पंचायत ने ली। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत, गांव और संस्थान तीनों के मिले जुले रूप से ये बहुत बड़े स्तर पर प्लांटेशन हो रहा है और ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी पिछले कुछ सालों से जो हम कर रहे हैं
इस्माइलपुर गांव में भी हमारा मॉडल विलेज के तौर पे, रिसोर्स विलेज के तौर पे है, जहाँ पे देखा जा सकता है। जो मैं पार्टिसिपेटरी एक्वीफर मैनेजमेंट की हम जो चर्चा कर रहे थे, कि उसके बारे में जो भी मेजर डिसीजन होते हैं वो गांव की कमेटी है, ग्राम विकास समिति है, उसके साथ बैठ करके इस पर चर्चाएँ होती है। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स कुछ हमने डेवलप करे हैं, कुछ हमारे को संस्थाओं के साथ में मिलकर के हमने विकसित किए हैं। जैसे अभी हमने अपने स्तर पे पहले वाटर टेबल मेजरिंग डिवाइस डेवलप की थी, उसको फर्दर डेवलप करवाया हमने पहले आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के, ये कॉन्टैक्ट बेस्ड वाटर टेबल मेजरिंग डिवाइस थी। अभी हमने सीरी के साथ मिलकर के एक नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड वाटर टेबल मेजरिंग डिवाइस डेवलप की है सीरी ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी तरीके से एक सेंसर बेस्ड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एक डेवलप किया गया है, ये सोलर बेस्ड है। फील्ड में जाते हैं, वहीं पे वाटर सैंपल लिया, वहीं वाटर सैंपल को टेस्ट किया और टेस्ट करते ही उसकी जो रीडिंग्स आ जाती हैं ऑल 12 to 14 पैरामीटर्स, वहाँ हम गांव वालों के साथ इमीडिएट शेयर कर लेते हैं कि ये आपके गांव का पानी का क्वालिटी है, आपको इसमें आगे क्या करना है। जो साइंटिफिक स्टडीज़ की बात हो रही थी, अभी मेरे से पहले भी जो साथी बात कर रहे थे, हमने पूरा जियोफिजिकल स्टडी हर गांव की हुई है। जियोफिजिकल स्टडी हमारे पास में है, हर महीने हम वाटर टेबल ले रहे हैं, हमारे जब भी बारिश हो रही है हमारे पास रेनफॉल के डेटा, हमारे जो जल योद्धा हैं वो रेनफॉल के डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को मिला करके हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि कितना पानी बचा है उस गांव के पास। सपोज उनका वाटर टेबल 280 फीट पे है और लास्ट हार्ड रॉक 300 फीट पे आनी है, और पिछले सालों के उनके वाटर टेबल के डेटा क्या कहते हैं जो कि उनके गांव में डिस्प्ले हुए हैं, उसके आधार पर ये कैलकुलेट करके हम उनको बता पाते हैं कि आपके पास अगले 2 साल का या 3 साल का पानी बचा है। अब इस 3 साल के पानी को 13 साल या 30 साल कैसे करना है, अब उस 3 साल के पानी को आगे बढ़ाना है तो हमको हमारे क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा, हमको रिचार्जिंग एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो हम बात कर रहे हैं कैच द रेन, हर बूंद को हमको बचाना पड़ेगा। ये एक लास्ट मेरी स्लाइड है, मैं 1 मिनट और लूँगा बस सर, माफ़ी चाहते हुए आपसे। ये जो अभी आप वीडियो में भी देख रहे थे, ये एक पेंटिंग है। ये केवल एक पेंटिंग की दृष्टि से नहीं, ये हमने राजस्थान में और ख़ासकर शेखावाटी एरिया को इसमें दिखाने की कोशिश की है। यदि आप इसकी 4 विंडोज़ हैं, चारों विंडो को आप देखेंगे, पहले तो ये बता दूं, ये एक चित्रकारी की एक आर्ट है जिसको फड पेंटिंग कहा जाता है, और फड को बाँचा जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है। तो इसका पहला विंडो जो है वो ये दिखाता है कि ये आज से 50 से 60 साल पहले का स्टेटस है, खुशहाली थी। नीचे आप देखेंगे तो बाजरे की फसल इसमें दिखाई दे रही है, मोटा अनाज था, रेनफेड एग्रीकल्चर था, वो है, तालाब थे, केवल सैनिक थे, कुछ खेती होती थी, लेकिन लोग खुश थे। आप नीचे देखेंगे इसमें लोगों को लग रहा है कि लोग खुश थे, नाचते गाते लोग हैं, अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद में 89 के आसपास आते आते हमारे यहाँ 83 के आसपास आते आते बिजली आने लगी। जैसे ही गाँव में बिजली आई, सबसे पहला काम ये हुआ कि हमने जो मोटा अनाज हमारा था बाजरा, उस बाजरे को छोड़ दिया और हाई वाटर इनटेक क्रॉप गेहूँ पर आ गए। गेहूँ आते ही और पानी बिजली से चलते ही हमने उसका थोड़ा दोहन बढ़ा दिया, टंकी से सरकार ने टंकी लगा करके पानी देना शुरू कर दिया, और उस पानी का मिसयूज होना शुरू हो गया, क्योंकि बटन दबाते ही पानी मिल रहा था। चीज़ें बदलना शुरू हो गई, कच्चे से पक्के मकान आ गए, और उसके बाद में जब हम अति पे आ गए, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, तो हम एक्सट्रीम पे आ गए, तो स्थिति ये हो गई कि जो पहले हमको पानी दे रहे थे वो अब आग उगल रहे हैं, वो कुएं, हमारे तालाब सूख चुके हैं, पानी बिकने लगा है, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि हम इस वाले फेज़ को वापस पहले फेज़ में कैसे लाएं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, एक एक ड्रॉप पानी की बचानी है, एक एक ड्रॉप पानी की बचा करके हम इंटीग्रेटेड वे में करेंगे। जो पानी स्टोर करना है स्टोर करेंगे, बाकी पानी को रिचार्ज करेंगे। दूसरा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है, हमको कवर्ड शेड नेट हमको एग्रीकल्चर करना है, कम पानी में ज़्यादा हमको उत्पादन लेना है। उसके लिए क्या एग्रीकल्चर हो वो हमको करना है, हमको हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना है, हाई वाटर इनटेक क्रॉप्स को हमको खत्म करना है, लो वाटर इनटेक क्रॉप को हमको लेना है, तब जाकर के हम फिर से वो नाचती गाती स्थिति में आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये एक प्रयास हमने किया है, और इस वॉल पेंटिंग को हम गांव में जगह जगह लगाते हैं। ये एक वॉल पेंटिंग तो एक गांव में बनाई गई थी, इसकी फ़ोटो लेके अब हम अलग अलग गाँव में जाते हैं, खासकर जब हमारा जल रथ निकलता है तब साथ में, ताकि गाँव में लोगों को समझाने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
Very good afternoon, very good evening. In fact, Honorable Secretary, Additional Secretary, and Mission Director, and officers of the various departments of the Jal Shakti Ministry, and dignitaries, colleagues, for everyone, I thank you very much for your patience. And then I will start with what Pradhan is doing and what we can share about it. Respected Chairman, as he told, Pradhan is working in water, soil and water conservation related in many states in India. It has, as we all know, our agriculture, land, water resources vary place to place, and so the Pradhan projects also vary from states to states. So here I would like to share some of the aspects of Pradhan's work in tanks and ponds in South India, especially in Tamil Nadu. So the project had its origin in early 90s and funded by very many donors and the government, including the Water Resources, Public Works Department and Rural Development Department. Okay, so what is that we are trying to say? As the title goes, it's all about the sustainable development. Professor Nirmal Sengupta used to ask, he's an economist, but he's a very different man. He used to ask, what all you think is the sustainable, the meaning of that sustainable? The classical meaning, or whatever the UN definitions goes, any activity or development work that should meet the present needs without compromising or doing harm for the future generations. Can we name any one intervention, human intervention in this country, in the water sector, which has sustained for hundreds of years? I am very certain that, except for, in the sense, I am just emphasizing, the tanks and ponds are the most important such sustainable development work has survived over centuries. After, say, 15th or 16th century, not many tanks are found in India, except in Madhya Pradesh and parts of Andhra Pradesh. There were dedicated new tank formation projects. But for that, it's all only repairs. From 8th century onwards, you will find plenty of inscriptions which details about repairing the tank works, not constructing new. All that it means is the landscape is saturated with tanks, ponds, channels. So in Tamil Nadu, most, if not leave the Kaveri, rest of the rivers, they start in tanks and end in tanks. All that it means is the entire landscape is being made by human interventions. So the river that you see that are drained, the channels that you see that are man-made, the tanks that you see, that's completely man-made. So one of our colleagues was speaking about the lakes. There are some confusions, but I will go by what is classical in understanding in engineering, because engineers were the one who wrote all these things. The etymology of the word tank has its origin in Western India, tankas. It went to Portuguese, thank you, and then came to India through English as tanks. So these are very classical Indian technologies that have survived and still surviving. And then I will come to, in the morning, our Madam Secretary was making an observation. We have made efforts to geotag all these water bodies in this country through a dedicated project. It's a very excellent initiative. But I would like to say the PWD, or the Public Works Department of the Madras Presidency, that Madras Presidency extended from Berhampur in the north up to Tirunelveli in south and Malabar in the west. For the entire area, tank restoration survey memoirs
were published in print with maps before 1931. And by 1880, 90% of all tanks in Madras Presidency were survived. In that memoir, though the word is very, it has to be understood in engineering terms, it has nearly 80 parameters, right from the revenue records data. What is the area of the water spread? What is the area of the command? How many sluices are there? And all features, what is the length of bund, what is the weir size, and how it works, and all that. And most importantly, using all the Indian land surveys, starting from Lambton till now, they have, at that point in time, they have entered latitude, longitude, and most of all important is the altitude. Measuring altitude is just simply a very difficult job. Every geographer will appreciate. So suppose Tamil Nadu has 40,000 tanks, on average there are 4 or 5 sluices. You have 200,000 sill levels of data which is recorded, it is available. In many districts they still use, some of them are reprinted from that time till now. Many of them are not using because there is not money in it. So the government go by very strictly monitoring where they spend more money. But keeping these records and other things are left to someone else, but it is not there. So my first suggestion for the recommendations out of this workshop will be the Union Ministry should take serious efforts to find all those records and publish it in terms where everyone can use it. Otherwise, one of our friend was showing the tanks in Karnataka, that is in Bangalore. I was horrified because what is that happening in reality, say a person or an engineer like me, is we are only dismantling what has been constructed in 8th or 11th century because somebody has encroached, something has come out, we are allowing them, and then we have retaining what is the leftover of that. So when we are kicking out poor people for encroaching, why not? You kick them out. In any case, they are properties of the state and they are properties of the irrigation infrastructure of the country. And to me, to Pradhan, it means we are killing ourselves by legitimizing such encroachments and allowing them to destroy our own infrastructure. Okay. So this is one of the first thing I would say. Then I'll go into my presentation. I had a small film clip, but I don't know whether we can show it or not. So why and how the tanks and ponds have come in large numbers in Deccan area? That's simply because the rainfall is erratic, undependable, and it's totally monsoon based. And the geography, we all know it is an undulating geography. It is not like Indus Valley or Gangetic Valley, miles and miles you can travel without crossing a channel or something. But in Karnataka or in Tamil Nadu, every mile you will cross one channel and you will see a culvert. So all that it means, below the culverts, some channel, supply channel is running for a tank. So it exists everywhere because of the geography and the hard rock formations. I will come to that a bit later. And absence of ever-flowing rivers. And then the most important aspect, people are now talking a lot about the flood. So what the tanks and ponds does, it catches and stores the water when that rain happens. Because the entire landscape is full of channels and rivers, the excess go to the sea in a safe manner. Now, what is happening is, like what we have noticed in cities like Bangalore, Hyderabad and Chennai, we have dismantled part of the infrastructure. So the most critical is the channel. So now you are ended up with floods.
personally, out of my 30 years and more experience, we can never solve flood problems in cities. This we have from 94, Pradhan itself has given in writing in several conferences, several meetings, we are going to face more and more floods in urban areas. There is no resolve unless we solve this problem of bringing back what was existing in the past. So my humble request for the recommendation too could be this: no mercy on channels. There's no mercy, there's no escape. You are ruining, so billions, I think, I don't know how many billions, 2016 Chennai floods. It's all simply man-made. There's no reason for that. Okay. So the tanks and channels and ponds act as both. They are mitigators of drought and floods. And second, there's nothing natural about it. All these tanks are man-made. So it means the human beings before us have created. So there is no divine intervention, there is nothing. So these are all named after ordinary souls. The tanks are named after them. So all that it means, it's all human interventions. So I don't know, this one data, this is more recent. There are several data, how many tanks and ponds are there in this country. One estimate, this is very conservative estimate according to me. There are some problems with the classification. With all that, they are trying to say at least 0.8 million water bodies, they call it as wetlands in this country. Most of them are tanks and ponds. So they say 4.63% of the geographical area of this country is underwater, that is the inland water body. This is very conservative estimate, will go. So I'll show you one example of a tank intensive district to understand the extensive nature of this. Ramanathapuram is a coastal district, roughly around 4,000 square kilometers. There are 400 revenue villages and 2,362, say, let us say 2,400 habitations, 6 hamlets or habitations per revenue village in that way. So the number of ponds and tanks alone around 5,600. And every revenue village has on an average of 14 water bodies. So the most critical of the information here is every habitation has got more than 2 water bodies. So remember, every hamlet still has that. Whether they are in order or not, that's a matter of debate. These are still existing in paper, in law, in our records. So the block goes by the same way. It's a plain area. It is close to Rameswaram and that area. It's very just okay, sir. Okay. So I'm just showing this picture of what is the variance from the normal rainfall. Look at the middle of the graph, that is the northeast monsoon, returning monsoon that tanks benefit. So out of 12 years, 6 years they get more, 6 years they get less, even that. So the importance is very much. Okay, now let us go to the question of groundwater. So we are trying to say it has got many uses. These systems are not single-use irrigation systems. They are meant for different things. Prescriptive right for those who are in the command area. Customary right to use water, fuel, silt, sand, everything for those villagers who live by. So it is a multiple use system. So let us remember that. So today they are not in order. So then I'll come to the groundwater. In groundwater literature, what is the scope of recharging in hard rock areas? There are many studies in the early 1990s, I think 1990 or so. Anna University has done experiment using
isotopes to find out what is the area of influence of a groundwater. So it was roughly 1 mile, 1.6 kilometers, and the same is reconfirmed in studies done in 2010 also. So I told you, every 2 square kilometer, you have got one water body with a circumference, it's a very long, so the groundwater recharge is a factor of what is the wetted perimeter of any water body. So it means you have enough to do by rehabilitating these tanks. The groundwater recharge are best done only through this. And then I come to the last of my request for recommendations. I think I am not very cynical. Our laws are made, though the objective says it is to protect, but in reality, they are just dismantling what is existing in law so far. Say, for example, the 2017 wetland guidelines have excluded man-made wetlands. So if you exclude man-made wetlands from protection, what is left in India? There is nothing, absolutely. It's so crazy. They claim, the law claims, the statute goes on saying X, Y, Z, we are going to do this, that. Then finally, they have simply excluded this. It is not an anomaly. It is based on some Supreme Court judgment. It's very ill-advised judgment, I would say. There are some judgments which keep on, but there is no consistent jurisprudence when it comes to protecting water bodies. So, Hinslal Tiwari, that says it should be protected. Intellectuals Forum Tirupati case, that also protected. But you cannot revert back. What is built, you allow it. That's what we have seen in Bangalore. And Jagpal Singh, they say if encroachment is done by SC/ST, you just allow them. This exists from the days of British. They have given away all these lands because to maximize the land revenue. A poor man has encroached, you just leave it because the government gets more money in those days, but not anymore. So even that judgment is in my mind, it is very ill-advised. And then Akash Vasishtha and Jitendra Singh, all those things, all those cases are either partly addressing a problem or mostly ignoring the critical of the problem. So I would request our Honorable Secretary here, there must be steps taken to remove this kind of, it's not anomaly, it is a very serious thing. What we are talking about is, I will just remind you with the data. In southern states, irrigation is not growing. Especially states like Tamil Nadu, we have lost 0.6 million hectares of land under tank from 1960. So you can imagine what are we talking about. What our forefathers have created, we have just destroyed. So there is no other words to say. Today, it's only around 0.45 million hectare or something tanks, but what it was 1 million hectare. The same is the case with Andhra. It's still worse. Telangana now, it seems to be better. But generally, it's simply dismantling. And then, now, we are also talking about the groundwater thing. So what happens is, when you don't have the channels and the storage mechanisms, that is the tanks and ponds, how do you increase your groundwater? In hard rock geology, the intensity of rainfall is also very high. That is very short time, between 20 and 40 days, all that rain happens in South India. How you can recharge all that without having this kind of system? Only when you store on the surface, you can get your water in the wells. So I would once again request, from that perspective, if there is only one way to solve the question of groundwater, at least in the Deccan region, we should sincerely address the question of tanks. Without addressing that, there is no point in talking. We are talking about big numbers. We have lost half of the tank irrigated area.
what was existing. So we are not going to create anything new of that order. What you create may be very small incremental change, but we are talking about a colossal damage that we are inflicting on ourselves. So I'm finished. Good evening to all of you, respected session chairs. Today I'm going to deliver about, I'm going to explain about briefly about the MARI project. So the MARI project which was started in Rajasthan and Gujarat in 2 states in the year of 2012 before 10 years. So the MARVI stand for Managing Aquifer Recharge for the village level intervention, because the project was started earlier, and the Professor Basant Maheshwari, who is the leader of this project, so who thought that this project should be should be started with the help of villagers, because researchers can do everything in the field. They can take data, but if the farmers will take data, then he can understand slowly about what is the situation and dynamics of the groundwater is happening, what is the happening in the villages. In this project, we have selected local volunteers and we call them Bhujal Jankars. So they are locally living in the village. So we have selected in the Udaipur district 5 villages. In each village, we have selected 5 Bhujal Jankars. So they are locally living there, and they a little bit know about their surroundings, how much there are open dug wells, and where is the check dam, and they can help to the researchers every time. And actually their education was only 8 or 10 standard. So this is the photographs earlier when we had meeting in Gujarat and in Rajasthan with the local villagers. So when the researchers firstly came into the village and they talked about the project, so villagers said that you have to give us money so we can solve our groundwater problem. You have to give us money and we can solve our groundwater problem. So Professor Basant said, how you can solve your groundwater problem with the help of money. Yeah, farmers said that we will dig more well and we will extract more water from the ground, and our problem will be solved. Then professor said that it is not your solution of groundwater. You have to manage your groundwater, you have to monitor your groundwater, you have to know about your groundwater. So initially we have selected the villagers, we call them Bhujal Jankars. They did survey there, and they have selected their dug wells and they started monitoring at every week interval. Yeah, so they have done marking also. So they are actually monitoring from last 10 years. Groundwater water level data they are taking from last 10 years at each every week interval. And they have also monitored check dam, because check dams run only in monsoon season. So they have monitored their water level at a daily basis, and they have provided all the data to the researchers, and we have done analysis and compiled all the data, and then we explained to the villagers about all the groundwater dynamics. In 19, we have constructed few recharge pits. So initially in the Rajasthan, about 15 years ago, government of Rajasthan have constructed few recharge pits near to the well to recharge directly to the well. So what happened, the runoff generated in the monsoon season, and water came in the pit, recharge pit, and directly dropped into the well. So same things we have done also in 16, 17, 18, and also I went to the Spain, Madrid, and to present a paper on it. So our finding was that to recharge this dug wells directly without filtering this water can accumulate and disturb the water quality of the existing well. Water quality can be disturbed also. The existing fractures can be blocked. So what we have done in 19, 20 and 21, we have constructed few of the recharge pits nearby to the well, but we are not recharging those wells directly. This groundwater, this runoff water only recharging into the ground.
So nearby water level can be increased. So we are actually doing these things right now. And they have started monitoring water level of the wells with the help of measuring tape, simple measuring tape. They have used a float at the end, and they started this. So all the BJs did this work together. Actually, this is the documentary made by one of the person, news reporter in the ऑस्ट्रेलिया की village. टीम और यहाँ के मतलब आए थे इस वाटर लेवल के नापाने के लिए। तो हमारे को बोले कि भाई आप हमारे कुएं का नाप ले लोगे क्या, आपके कुएं का। तो मैंने कहा कि भाई ले लेंगे हम। तो पहले तो हमारे को इस कुएं का घेरे ही नापाई, वो फार्म भर दिए हमने। और फिर बाद में हमारे को ये कहा कि भाई आपके कुएं की नाप लेना हर संडे को। तो हम हर संडे को फीता डाल के हम नाप ले लेते और जितना भी होता उतना हम हमारी डायरी में लिख देते और फिर हम डेटा भेज देते थे। जैसे हमारे को ये मैडम आते हैं, योगिता जी मैडम आते हैं, पिलाजी आते हैं, उनको हम ये डेटा दे देते। So all the BJs we have selected and ACT, Arid Community Bhuj, they have given training about the how to measure the groundwater, and they have given training about the different modules of map. So they have given about seven trainings, 7 different kind of maps they have prepared, and BJs have been trained about this. These are the photographs of the few recharge pits there. We have constructed with the help of government, Rajasthan government fund. This is the check dam where we did put a paint gauge board, and BJs have taken everyday photographs in the monsoon season. So what is the water level? They can calculate what is the difference in 24 hours. Yeah, these are the photographs of the map preparation by the self BJs. We have installed rain gauge also there because actually, in the field, farmers are not aware about how much rain is happening. They will say there is a good rain or not good rain, but they don't know what is the amount of the rain. So we started we have given few manual rain gauges in the field, and they started monitoring, and they learned about it. And now they say there is 600 millimeters, 700 millimeters in the quantity table. Yeah. We have also tested water quality because groundwater monitoring, water level is a one thing, and water quality is also important there. So we have started monitoring pH, EC, TDS, turbidity, and BJS self take water samples. So we have noticed that in the watershed area is about 5,000 hectare, and we have found that in one village, every year, in every monsoon, pre and post monsoon, there is a exit limit of the fluoride in that area, and there is not too much difference from one village to another village, only 2 kilometers. So we can say groundwater is water quality is not equal at everywhere. So in every project, we have to take data on the water quality and water level also. So we can do compile also this. And BJS local volunteers importance is very well because we know every projects come from the government or researchers. They know everything about the project, but we have to involve local volunteers, local villagers, because they know locally about their area, their geology. They can say us where you have to construct a pit or anything recharge structures, so you can easily get their water. Because in last 3 years, government of Rajasthan constructed many check dam, many structures in Rajasthan in MJS, Mukhyamantri Jal Swawalamban Yojana. And farmers got benefit also from these structures because they are nearby in the village, near to the well. So they found that the water level was increasing there. So farmers' experience is also very important. They, we do a PR also in the village because we want to know about the farmers' knowledge. We can get some help from them. That's it from my presentation. Thank you. This is a move away from the old method of coconuts for identifying well points to the science of geology and hydrogeology. And this is a move
which needs to be ramped up. As Madam was mentioning in the early morning hours, perhaps this is the time to combine all this rich experience, bring it to one web platform or even a book, which can be shared extensively amongst not only the audience here, but all those who practice groundwater knowledge and groundwater engagement with communities. I think it will be very rich as a document. We have had the water talks as part of experience shared by individuals who have been working on water and institutions who have been working on water. Perhaps we need a portal exclusively on groundwater, and perhaps the CGWB portal, which already makes some space for citizens to report what they have been finding, can be expanded to include rich experiences like participatory groundwater management. That is what seems to emerge from this. I thank the audience. I thank the panelists, first of all, for these very deep and incisive presentations. I thank the audience for the patience that you have shown. I regret that we will not have questions now because we have already extended an overshot time, but I'm sure that you will make the opportunity of meeting with each one of the panelists individually and ask them questions, and अपनी बात को आप इनके आगे रखें, गहराई से समझें और इनके वासन के स्टॉल में जाके कम से कम वहाँ जाके ध्यान से देखें कि क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि स्टॉल वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा है वहाँ पे, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही सीखने को बहुत कुछ मिला। धन्यवाद।